Adi, your wings sparkle bright wonders that heal broken worlds. Arbajani, the river of winged dreams. Thank you so much, everyone, for joining us today. Good evening to everyone. On behalf of Nehru Center, I would like to welcome you all for the open mic event today as we come here together to celebrate World Poetry Day. Before we start the event, I would want to request the Deputy Director, Mr. Sanjay Sharma, to please come on the stage and say a few words because this event also marks one of the first in-house events of Nehru Center to have everyone here, all the poets, come together. So, sir, if you could please come and grace us with your occasion, with your presence. Sorry. Very good evening. Today we all have gathered to celebrate World Poetry Day. UNESCO first adopted 21st March as World Poetry Day during its 30th General Conference in Paris in 1999. With the aim of supporting linguistic diversity through poetic expression and increasing the opportunity for endangered languages to be heard. Every year, World Poetry Day is celebrated to recognize the unique ability to make poetry and encourage people who are creative enough to capture life poetically. On this day, literary people organize various events, honor poets, revive oral traditions of poetry recitals, and promote reading, writing, and teaching of poetry. I strongly believe, just like beats and rhythms of music, poetry also has a rhythm in which the brain operates the same way as it reacts with music. Therefore, the rhythm of poetry touches the soul of person like music. Today, we have invited some of the finest poets who will share their creativity. So, ladies and gentlemen, let us immerse ourselves in the rhythm of poetry. Thank you. Okay, before we begin, I'll quickly go over, how we'll be conducting the event today. So, first things first, it's obviously wonderful that a lot of you are reading your original poems, and it's fine if you're reading other authors too. But just when before you start, if you could mention your name, where you're coming from, if you've authored the poem or who's the author of the poem, and if you could add when did you first start writing poetry, if you've written the poem, or like if you're a poet, that's okay. Okay, so just keep it short, just 2-3 lines before you start the poem. We will have a buzzer. We'll have a buzzer at 2 minutes. I will be controlling it there. It'll be on speaker, so you will hear it clearly. I'll try to give you a buffer zone of a couple of seconds more, but please respect the time that everyone's been given. I was clearly mentioned 2 minutes. Last but not the least, of course, when someone is speaking on the stage, and a lot of us will be speaking for the first time ever, or they are novices, so make sure that you listen carefully, cheer up the person, clap after they speak, of course, and keep your phones on silent or keep them switched off if you can. I know this will be too much for today, but in case you can, instead of clapping while the poem, like if you feel like clapping or like even after the poem, you can always click
Okay, like instead of clapping. That's generally a open mic tradition, and it's really nice. Like it's less disturbing to the person who's speaking, and it's less, intimidating. But yeah, feel free to clap after the person speaks. Okay, I'll quickly go the lineup so that I won't be coming on stage every time the person comes. Just you can come one after the other, and please take you feel free to sit and speak your poem or stand and speak, whatever you're comfortable as. Okay. The first poet that we have here will be Mr. Tejinder. Then there is Prapti. Then there is Astha Deo. Then there is Mona Dash. All right? If you've got your lineup, one after the other, you can please come here, take your stage, and then start like the stage is yours. नमस्कार, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। मैं लगभग 45 सालों से लिख रहा हूँ। ये बजर बज गया मेरा। नाइस मीटिंग यू, फिर मिलते हैं। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए अंग्रेजी में किया, लेकिन लिखता हिंदी में हूँ। और आपने देखा होगा कि हाल ही में कोरोना जब हुआ है तो पूरी दुनिया में किस तरह के हालात थे। तो मैंने कोरोना की एक फ़ोटो खींची है बिना कोरोना का नाम लिए। मेरे हिसाब से साहित्य में जब हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं, अगर उसका नाम भी लेते हैं तो वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है। तो लिखा है कि रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है। लग रहा है ज्यों सड़क पर खुल गए शमशान है। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है। लग रहा है ज्यों सड़क पर खुल गए शमशान है। दूरियां 2 गज की कैसे प्यार में संभव भला। दूरियां 2 गज की कैसे प्यार में संभव भला। घर में बैठे हैं मगर सब लग रहे अनजान हैं। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है। एड़ियां फटने लगी हैं, खून भी रिसने लगा। एड़ियां फटने लगी हैं, खून भी रिसने लगा। गांव तो जाना ही है, खतरे में चाहे प्राण हैं। शहर हो चाहे कोई भी, एक सा खतरा हर तरफ। शहर हो चाहे कोई भी, एक सा खतरा हर तरफ। लोग कितने चल बसे हैं, इस खबर पर कान है। लोग कितने चल बसे हैं, इस खबर पर कान है। आपने सुना होगा अमेरिका में एक कब्र बनाई जिसमें 100 मुर्दे इकट्ठे डाल दिए गए। तो लिखा है कि कब्र ने भी इस तरह अपना बढ़ाया दायरा। कब्र ने भी इस तरह अपना बढ़ाया दायरा। एक ही में जाने कितने रह रहे मेहमान हैं। रास्ते को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है। लग रहा है जो सड़क पर खुल गए शमशान है। धन्यवाद। Good evening, ladies and gentlemen. My name is Prapti Deb Sarkar and I'm 11 years old. Today I will be performing a famous poem written by Kazi Nazrul Islam. Bolo bir, bolo unnato mamashir,
শির নিহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। বল বীর, বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফারি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, ভুলোক দোলক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসনারস ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর। মম ললাটে রুদ্র ভগবান জলে রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রীর। বল বীর, আমি চির উন্নত শির, আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস, মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস, আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর, আমি দুর্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার, আমি অনিয়ম উশৃঙ্খল, আমি দলে যাই যত বন্ধন যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল, আমি মানি না কখনো আইন, আমি ভরাতরি করি ভরাডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইম, আমি ধৈর্যটি, আমি এলোকে সে ঝড় অকাল বৈশাখীর, আমি বিদ্রোহী সুত বিশ্ববিধাত্রীর। বলবীর, আমি চির উন্নত শির, আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি, আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি, আমি নৃত্য পাগল ছন্দ, আমি আপনার তেলে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ, আমি হাম্বির, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল, আমি চলো চঞ্চল ঠমকি ঝমকি পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি ফিন্দি আদি তিন্দোল, আমি চপলা চপল হিন্দোল, আমি তাই করি ভাই যখন চাহে মন যা, করি শত্রুর সাথে গলাগলি ধরে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা, আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা, আমি মহামারী, আমি ভিদিয়ে ধরিত্রীর, আমি শাসন ত্রাসন সংহার, আমি উষ্ণ চির অধীর। বলবীর, চির উন্নত শির, মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়গ কৃপান ভীম রণভূমে রণিবে না। বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন, আমি স্রষ্টা সুদন শোক তাপ হানা খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন, আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন, আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন, আমি চির বিদ্রোহী বীর, বিশ্ব ছাড়িয়া উঠিয়াছি একা, চির উন্নত মম শির। নমস্কার। This poem is about someone who breaks free of all burdens and who can stand up by themselves without any help, and they wish to rebel to all injustice. Thank you. सबसे पहले सबको नमस्कार। और मैं आस्था देव पिछले कुछ सालों से हिंदी में कविताएं लिखने का प्रयास कर रही हूँ। हिंदी में कविताएं, कहानियाँ, नाटक लिखने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ मंचों पर कहा भी है, पर सीखना जारी है और किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, तो पढ़ती हूँ। और आपके सामने रख रही हूँ एक कविता, जो कविता है, कविता का शीर्षक है लंदन। और ये कविता उस फेज़ के बारे में है जब हम ट्रांजिशन करते रहते हैं, जब हम किसी नए देश में आते हैं। तो कविता को शुरू करती हूँ। उभरता जा रहा है, उभरता जा रहा है एक नया शहर मेरे अंदर, अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। उभरता जा रहा है एक नया शहर मेरे अंदर, अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। इसकी गगनचुंबी इमारतें, इसकी गगनचुंबी इमारतें और सपाट हरी मैदान मेरे अंदर एक ख़ास जगह बना रहे हैं, बड़े रुआब के साथ। उभरता जा रहा है एक नया शहर मेरे अंदर। कुछ चमकती लाल बसें, कुछ चमकती लाल बसें दिन रात दौड़ती हैं इन भीड़ से थोड़ी भरी चिकनी सड़कों के साथ। सड़कें खाली हों या भरी फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ, सड़कें खाली हों या भरी फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ। चमकती रहती हैं स्ट्रीट लैंप की ताब के साथ। मुझे नहीं लगता अभी बन पाया है एक रिश्ता मेरे दरवाजे के उस तरफ रहने वाले लोगों के साथ। फिर भी जब हवा उड़ाती है खिड़की के पर्दे तो, फिर भी जब हवा उड़ाती है खिड़की के पर्दे तो,
ताका झाकी अमूमन बनी रहती है एक आस के साथ। यूँ तो एक लंबी दूरी तय कर ली है हमने घर से, लगेगा अभी समय बसने में इस नई सुबह के साथ। दिल करता है पूछूं उनसे जो बरसों से बसे हैं यहाँ, कितना वक्त लगा तुम्हें चलने में इस शहर के साथ। कईयों के पुराने सपनों को सच करता हुआ ये शहर नए सपने देखने की जिद देता है गुजरते वक्त के साथ। तब नदी के प्रवाह जैसी नहीं रह जाती जिंदगी, बन जाती है एक यात्रा बंधे बंधाए कार्यक्रम के साथ। और ये 4 लाइनें हम सभी के लिए जो याद रखने वाली हैं कि कम से कम बढ़ रहे हैं हम इंसान यहाँ जैसे पेड़ बढ़ते हैं, पर चाहिए हमें ऊष्मा, न बन जाएं हम ठूंठ ठंड के साथ। तो ज़रूरी है कि ढूंढ लें कुछ अपने लोग दिल में बसने को, ताकि बसा रहे हमारा छोटा शहर दिल में लंदन के साथ। तो आशा करती हूँ मेरी कविता आप तक पहुँची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। So, as Pranjula told, I just want to talk about it in English. So this whole poetry is about the transition phase, when somebody moves from a country to another country, and what are the challenges they face, because it is not easy to move to another country, how we adapt to different culture, how the whole lifestyle is very different, and somewhere down the line we're trying to adapt that. But when we meet few people who are like-minded, like all of us, so probably that helps us to grow better, and that gives us the warmth, because I feel every human being needs some warmth around to grow and evolve. So this whole poetry is more or less about all of us and dedicated to all of you. Thank you so much. Hello, everyone. Good evening. And my name is Mona Dash, and I'm an author and a poet. I have 5 collections of kind of a mix of short stories, memoir, and of course poetry. I also work in a completely different space, which is in technology and in sales. So it's almost like a double life. And I work as part of a British South Asian Writers Collective as well, which is called The Whole Kahani. And I just wanted to mention that because we basically started The Whole Kahani as a kahani meaning story, which I'm sure everyone knows, but it's kind of to start to represent underrepresented voices, or voices which are not heard, like South Asian writers, and we wanted to basically talk about the whole story, which is the whole kahani. So we have 3 anthologies published. The third one, which we are trying to have a reading here in a couple of months, once I figure out the dates with Pranjula. So I've been writing poetry from pretty much as a child, but I think it was always, life takes over. I'd been busy with work and family and things. So it's only in the last few years that I've had some launches. In fact, this poetry collection was actually launched right here. And it's called A Certain Way. So I just thought I'll read the first poem in this collection. It's called A Certain Way. And the reason I'm reading it is, in fact, it's just sort of starts off from where the Astha's poem about London and a new city. So this poem is about
migrants or immigrants and how we are meant to feel and how we may actually feel. So it's called A Certain Way. As an immigrant, I'm expected to behave in a certain way. Color the walls with turmeric, fill my soul with lament for the land whose shores I have left to become richer economically, poorer emotionally. Fold oil into long black hair, dream the stars of the eastern skies. In this land I call my own, but never to be my own. And wrapped in saris, sapphire blue, sindoor red, I'm meant to be nostalgic about the monsoon spray dazzling my eyes, calming my burning skin. Instead, my mind, soothed by the nourishing, cool green of this land I live in, energized by the glowing orange sun of the land I come from, decorates ice cubes with spice. With silver anklets, red stilettos, the shortest, blackest dress, I sip Prosecco, spear olives expertly, pile plates with rice and chicken curry, while in the garden, lavender, jasmine, clematis, and marigold spread their roots, dance their petals into the pale gray wet skies and the searing sunshine. Uproot, grow, take root, parallel truths, a little of this, a little of that, because for an immigrant, there is no certain way to be. Thank you. This is going so wonderful. I'm sure you all agree. But now, before I announce who's next in line, I'm going to come here before you as a poet myself. And one of the reasons I was very keen to have this event here, I've been writing poetry since I was 13 years old, and I've written about 1,500 poems. In COVID, I got the opportunity to publish books, so I've published 2 books, one on positive poems and one on romance with lockdown, so lockdown poems. And they're all on Amazon. I've also taken out poetry books, like poetry courses on Skillshare and Udemy, so that because it's such a niche subject and everyone wants to learn, but no one knows how to start. So anyway. Today I'm going to read to you in front of you this Hindi poem. Generally I write English poems, but I have very limited Hindi poems, and I think this is one of my favorites, especially because all of us are reading a lot of COVID related, and this is again a Corona one. This is a reply to a poem that I've written before. It's called Dilli Ka Ricksha Wala, and this is like the Vapsi of the Dilli Ka Ricksha Wala. So I'll read the poem, then I'll tell you what it means. Unfortunately, there's no one to time, so if I'm going to try to keep it as short. Okay? आ गए वापस, आखिर आप आ ही गए घर वापस। कोरोना वायरस की वजह से ही सही, चलो आपकी वापसी तो हुई। जब शादी के ही अगले दिन बम्बई के ख्वाब लिए रात दिन निकल गए थे आप रेल की सवारी लिए। थक गई थी मैं दिन गिन। अक्सर सोचा करती थी कब ईद आपको लाएगी, कब दिवाली आएगी। नया साल तो बहुत दूर लगने लगा था, फिर दिन महीने साल बनने लगे और आपका बेटा आपके कंधों तक पहुंचने लगा। फिर ये नई टाइप की बीमारी आई, आपसे पहले उन्होंने आपकी सवारी रुकाई, रोजी रोटी आधी कमाई बनाई।
रोज रोज का खाना कम पड़ने लगा और रोज रोज का घर वालों से बहाना कम पड़ने लगा। 20 महीने बाद जब आपकी शक्ल देखकर सुकून आया, ऐसा लगा चलो कोरोना वायरस की वजह से ही सही आपकी घर वापसी तो हुई। रोज आपसे बातें आमने सामने हुई, रोज बच्चों को बाप की परछाई नसीब हुई। बाऊजी माताजी को आखिरी सांसों में आपकी मौजूदगी की खुशी मिली। आपके बम्बई के किस्सों से गांव को नई पहचान मिली। चलो कोरोना वायरस की वजह से ही सही आपकी घर वापसी तो हुई। That's it. Just to give you a context, this was like when our family had out of a lot of difficulty gone from Mumbai to Madhya Pradesh, and while driving down we saw all the labourers who were walking on the street and going back because all the transportation was shut during the lockdown. So that inspired the poem. So coming back to the host mode, now we have Valarmathi ji, then there's ST, then there's Sushil ji, and then there's Jenny. Okay, and last but not the least, we have Mona Sharma Gupta ji. Okay. Vanakkam. Good evening, everyone. My name is Valarmati Bharat. I'm from South India. I speak Tamil. I write poems in Tamil. I started write in Tamil when I was in year 6 in India. When I get angry, I write poems that nobody will understand, especially about teachers. That's how I started. I've been doing events in UK with the poetry events and debate events online in Tamil. So I wrote a poem, it's my own poem, so I wrote it in Tamil, so I'm going to read it for you. And then I have got translation as well. If time allows me, I'll do the English translation as well. I just wanted to give you the theme. Obviously, Tamil is a really complex language, so you can hear the rhythm, but try to understand from my feelings. My poems explore the connection of love and affection within one's lifetime. There are nine forms of love, and I ponder, can life be meaningful if love of any form is absent? That's my question. So my title is, Love is the only mantra to rule as in our world. அன்பு ஒன்றே ஆளும் மந்திரம். மரப்பாச்சி பொம்மை காலம் தொட்டு மரணப்படுக்கை வரை, மரப்பாச்சிக்கு பொம்மை காலம் தொட்டு மரணப்படுக்கை வரை, ஈர்ப்பில்லாத சூன்ய வாழ்வை இருள் வந்து ஆட்கொள்ளும். 9 வகை அன்பு, அதில் ஒன்றிலாவது மனம்பட்டு அந்த விந்தைக்குள் வீழ்ந்தெழுவா வாழ்க்கை வீரியம் ஆவதெங்கே, அந்த விந்தைக்குள் வீழ்ந்தெழுவா ஆத்மா வீரியம் ஆவதெங்கே, சிந்தை தெளிவடைய சித்தம் வலுவடைய சொந்தம் ஒன்றெங்கே சூழ்ந்திருக்க வேண்டுமாம், சிந்தை தெளிவடைய சித்தம் வலுவடைய சொந்தம் ஒன்றெங்கே சூழ்ந்திருக்க வேண்டுமாம். பொன்னும் பொருளும் பூவும் தளிரும் பெண்ணும் மண்ணும் நாடும் நட்பும் தானம் தர்மம் தெய்வீக தேடல் துணிவும் பணிவும் துறவர் வழியும் அறமும் பரிவும் ஐவகை உணர்வும் அடங்கும் கருவே அன்பெனும் அதுவே. அன்பின் இலக்கணம் அறிந்தோர் யாருமில்லை, அன்பின் இலக்கணம் அறிந்தோர் இங்கில்லை, ஆனாலும் அதுவின்றி அசைந்தோர் யாருமில்லை. கோபம் தாபம் மோகம் வேகம் கூனல் குறுகல் ஆடல் பாடல் சொந்தம் பந்தம் அன்னை தந்தை சொர்க்கம் நரகம் நீயும் நானும் அத்தனையும் இந்நேரம் மண்ணுக்குள் புதைந்திருக்கும் மானிட தார்மீகம் மனிதநேயம் இல்லை என்றால்.
விடம் கொண்ட பாம்பு கூட விலகித்தான் சென்றிடுமாம், விலங்கினமும் அன்பிற்கு விதிவிலக்கு கேட்டிடுமாம். காட்டை மேட்டை கடலை நதியை காற்றை நெருப்பை மலையை செடியை மரத்தை சுரத்தை நாயை நரியை மழையை நீரை வானை விண்ணை பட்டாம்பூச்சி சிறகின் அழகை பார்த்து ரசிக்க பற்றுதல் வேண்டுமாம். உயிரோடு உயிரணுவாய் உறவொன்று இல்லையெனில், உடலோடு உயிரணுவாய் உறவொன்று இல்லையெனில் ஊனத்தில் ஒன்றிடுமாம் உள்ளுணர்வு. தன்னை அறிந்து தன்னகம் மலர்ந்து தன்னலம் காக்க பேரும் புகழும் பயமும் பக்தியும் பிரிவினை வலியும் புரட்சியும் வளர்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் சொல்லும் செயலும் சூத்திர நடையும் செவ்வனே செய்யும் சுயநல அன்பு. எல்லா இயக்கமும் இதய கணக்கில் இயற்கையின் படைப்பில் இதுவே வழக்கு. நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Obviously, the Tamil is a bit complex language. The language I used is really complex as well. So directly to translate in English, unfortunately I'm not an English poet, but I'm giving the summary of what's the content of the poem. My poem explores the connection of love, obviously I said that before, and affections within one's life. A void of love can lead your empty life into darkness. How can one's love be meaningful if one doesn't experience the joys of affection? Love is the energy that powers of all human processes, willpower, morality, and thoughts. Whether you seek material possessions or God's blessings, they are guided with love. Good deeds or actions of affection. You naturally gravitate towards affection. Loving others, loving oneself, loving symbols and ideology are all enough to keep humanity striving to the purpose. Love is the riddle with the complexity. Even a poisonous snake can spare you if shown affection. Connection to nature requires love and affection. Similar to the blood running through our veins, our life is dependent on the flow of love. Without love ruling the core of our being, we are simply incompleted vessels. That's the whole contents of the poem. Thank you. Thank you. Hello, my name's Esty. I'm from Northern England originally, and I'm living in Kent at the moment. And I'd just like to say thank you very much for this amazing opportunity of bringing poets together for International Poetry Day. I'm really deeply honoured to be able to share my poem with you. I wrote it, I've been writing poems since I was a teenager, just more as a sort of emotional outlet. And I'm a musician, so I also write some songs. And during lockdown, when we were allowed to do more than 1 hour's exercise, I would go exploring. So this is a poem that I'd like to share with you about my exploration and the natural world that I saw during that time, which kept me going. So it's called Sky Paintings. Ancient landscapes of clouds, painting pictures on the sky, telling of times past and times to come. Like a clock, the sun reaches its zenith, warming the life hiding in the earth, until gently shoots emerge to worship the sun with unfurling leaves. It's okay, breezes come and stir the leaves of grasses and trees, rustling natural jazz, peppered with birdsong and snuffling animals, the heartbeat of the earth. As if speaking to an old friend from a distance, grey clouds from overhead, moisture vapours of the sea and breathy vapours of other souls. Clouds
shade out the sun and threaten rain. Scents of the earth and flowers seem stronger in the humidity. Who knows when we will next speak? Scents, sounds, signals. There is life everywhere, even in unexpected places, and so there is love in a theatre of little signs. A squirrel looks expectantly from a safe place near a tree. Friend or foe, as his eyes watch every move. Eventually I reach a wood. It is much darker in the shaded leafy groves than it is in the open as dusk approaches, changing nature as the clouds darken and the sun clock is waning. The pictures in the sky are painted deep midnight blue as the night falls, but the flowers still glow in the remaining light, giving out sweet scents to guide those who begin to lose sight of the path. A church spire which is lit blue to celebrate the NHS becomes focal for night travellers and points to the sky where there is one bright star to guide the way, Venus, the planet of the goddess of love. Thank you. Good evening, everybody. My name is Sharma Gupta, and just to tell you a little bit about myself, I have been a primary teacher for 16 years now. I started writing poetry when I was in college, and I so love expressing myself on paper. I've written a few poems in Hindi, but most of my poems are in English. To tell you a little bit more about myself, I did my master's from Delhi University, like Sir himself. And after that, at the moment, I also volunteer for radios and a TV channel wherein I do storytelling and rhymes and a couple of educational programs for a couple of villages back home in India. I want to thank you for this opportunity. I've had a lovely time. I think all of us were just fabulous. It was lovely to hear poems in different languages that really brings our community together. So thank you, a big thank you to everybody else. My poem, the one that I've penned myself, is called Our Journey. I just hope that it's not very grey. Most of my funnies are my poems are happy too, but this one is a little on the grey side. But again, it's a reflection of our journey called life. Here it goes. If we look back towards time, do we hear synchronizing chimes? Peek through the hazy memory lane. What did we lose? What did we gain? There was truly more love, more compassion, as if attachment and respect was a fashion. The bond between families spoke heaps. Relatives and friends were for keeps. Grandparents, aunts, uncles, and cousins. Oh, we still hear those tales, those lessons. Technology did not have fancy dimensions, but there were ample discoveries and inventions. So where did we go wrong? Our journey has not been, after all, so very long. Why are we where we are? How did our plans get marred? I am sure we aim to walk on the path of love and progress so that one and all could feel blessed. But were we able to back our finest harness? Alas, our world is hit by intolerance and aloofness. Where did the love between the families go? Who tossed respect out of the window? Why, despite the connectivity, do we feel so lost when there's so much that we boast? Is all that we can do is raise questions? Why is the climate change brewing tension? Why did the lens of power freeze? Oh, what's the origin of this new disease?
Is our world a wrestling ring, as if proving supremacy is the only right thing? Who is more powerful than the others? Why? We are still birds of the same feather. Why are life standards deteriorating? Should we not just recover or just keep debating? Are we not a human being first? When will we diffuse this hunger, this thirst? One heart, two lungs, a pair of eyes? Damn it, our organs are just the same. Does our blood not look alike? Is that not the case? Sorry, it is the same. You can't distinguish it on the basis of country, race, or religion. Why can't we live our life without clutches, with joy without grudges, with simplicity, sans fake fanfare, where we just breathe fresh, happy air? Why can't we agree to live in harmony, as deeds have more value than money, divide our differences through, and live a life that we perhaps meant to? And why can't we believe in our own religion and respect others? I'm sure the Lords above would have wanted to live us like brothers. Ram, Jesus, Allah, Buddha, Guru Nanak, Sai. Think of anyone. All they preached was love, peace, and forgiveness. So what is this rat race all about? Money? Fame? Pleasure? What are we trying to sprout? We all came to this world empty-handed, like models of clay. Apparently, we all depart the same way. No bank figures we take along. Sorry, not even a dime. Neither our bungalows, luxuries, nor any time. Nothing will be able to give us company. Our success, glory, celebrity status will all be in his custody. Every little thing will vanish in thin air as we march on our final journey. He will rest our case. Sorry, no attorney. So what do we yearn for? One day we shall all meet the shore. Thank you. Not going to close yet. We have another participant in our lovely open mic, Mrs. Manju Lodha. If I could request you to come and join us. जरूरत भी नहीं माइक की। आज वर्ल्ड कविता का दिन है, विश्व कविता दिवस है और मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ जितने भी यहाँ बैठे हैं। तेजेंद्र जी कहते हैं ना कि कौरव 100 सही लेकिन पांडव 5 होते हैं और पांडव को देखकर विश्वास बना रहता है। तो ये 5 पांडव हैं हमारी जो कविताएं सुन रहे हैं यहाँ पर तो इनको देखकर हमेशा मन में विश्वास रहता है। और आपने मेरा नाम ले लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस मंच पर आने का मुझे भी मौका मिल गया। इसको निकाल दो। अच्छा, हेलो, हेलो। आपने बेटा बहुत सुंदर पढ़ा, मैं उसी बात को आगे ले जाती हूँ, है ना। और आज जो हम लोग विश्व पूरा युद्ध की कगार पे खड़ा ही है, यूक्रेन और जो रशिया में हो रहा है उससे सभी डरे हुए हैं। कहते हैं कि पक्षी जो होता है दाना मंदिर में जाकर खाता है और मस्जिद में जाकर पानी पीता है। किसी राधा की चुनरिया कोई सलमा सीती है और कोई रफ़ी हर महफिल में हरिओम गाता है और कोई प्रेमचंद्र ईदगाह लिखता है और कोई रसखान कृष्ण को भजता है। मैं क्या जानूँ मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, मुझको तो हर इंसान में परमात्मा नज़र आता है, परमात्मा नज़र आता है। अगर पक्षी ये समझते कि ये आसमान मेरा है या ये सरहद मेरी है तो सच कहती हूँ हर रोज़ आकाश से भी खून की नदियाँ बहा करती, खून की नदियाँ बहा करती।
तो कवि नंद चतुर्वेदी जी की एक कविता थी, उसी पर मैंने अपने भाव लिखे हैं। उन्होंने जब लिखा होगा, जब कश्मीर और भारत में निरंतर युद्ध होते थे, कि फिर एक घृणा का अंधा सर्प उन्मत्त हो गया, आज फिर हमें केसर की क्यारियों में, चंदन की घाटियों में बारूद की सुरंग बिछानी पड़ रही है। इस दुख को हम कभी नहीं भूलेंगे, इस दुख से हम कभी नहीं उबरेंगे। चिनारों के पत्तों पर लग गई है फफूंदी, झेलम का साफ पानी मटमैला हो गया है, डल का बहता जीवन थम सा गया है, आकाश काले धुओं के बादलों से भर गया है, सफ़ेद कबूतर अतीत की बात हो गए हैं और बेगुनाहों के खून से श्वेत बर्फ भी लाल हो गई है। एक जिंदा शहर मौत के कुएं में दफन हो गया है। बहुत दिनों तक हम आकाश को नहीं देख पाएंगे, न कोई पुल बनेगा, न कोई पार उतरेगा, खाइयाँ और गहरी और चौड़ी हो जाएंगी। अब न घरों में कह कहे गूंजेंगे, न रेस्टोरों में धुनें बजेंगी, न जोड़े थिरकेंगे। अब घाटी में भयानक सन्नाटा, गोलियों की आवाज़ें और मासूमों की चीखें, चित्कारें और रुदन रह जाएगा। बहुत दिन लगेंगे, यहाँ तक कि बहुत साल लगेंगे आकाश के पार देखने में, झील के पानी को नीला होने में, हर सिंगार को मुस्कुराने में, पलाश को खिलने में। लेकिन तब तक तो कितना कुछ बदल चुका होगा। ये सच है कि युद्ध में कोई जीतता है और कोई हारता है, लेकिन उससे भी बड़ा सच है कि हारने वाला तो मरता ही है, पर जीतने वाला भी बहुत कुछ खोता है, बहुत कुछ खोता है। बहुत धन्यवाद। It's time to say goodbye, but I hope that you keep writing, reading, listening, and speaking your hearts. I hope that we feel and heal ourselves in the hurting world, which feels like it's falling apart. Poets, let's wear our hearts. Okay, let's give a round of applause for all of us here in the room. Each one of you was so good. I don't have any words, but I hope that you keep coming to our events. Now we have in-person events almost every day for the rest of the week and next month. So stay updated and free to talk to each other, stay in touch, and get connected as a community. It'll be the best return gift that you can give of coming here. Thank you so much. Good night. Yeah, sure. Yeah. Let's do that.